Uh, Good afternoon, friends. Namaskar. Afternoon. Adab. Let me at the outset wish each one of you very happy Independence Day. Tomorrow is Pakistan's Independence Day, 14th of August, and India's Independence Day on 15th of August. So we are here to wish each other's happy Independence Day and also share our thoughts to make our subcontinent a better place. आज की गुफ्तगू वेरी इनफॉर्मल तरीके से हो और जितना भी समय हम आपस में गुजारे हैं, whatever time that we spend together, let's make it very productive and useful and meaningful. हमें मालूम है कि हम लोगों के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं और परिस्थिति तो ये है कि इंडिया का हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में नहीं है, पाकिस्तान का हाई कमिश्नर इंडिया में नहीं है, कॉम्प्लेक्स है हमारी, बट परिस्थिति को ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। पर्पस यही है कि भाई एक दूसरे के कंपल्शंस, लिमिटेशंस को समझते हुए can we as members of this civil society contribute anything worthwhile for improving Indo-Pak relations? और आज प्योरली और हम लोग नंबर भी बहुत लिमिटेड रखा है जिससे कि बात हो सके और बात यही करनी है कि कैसे संबंध हो, तो किसके क्या सजेशंस हैं, whatever thoughts you have in mind. We treat it as a brainstorming session in which we share our thoughts and try and work out something that becomes useful, by which we are able to create climate of trust and confidence in the subcontinent. और अब इसके बाद जो भी मित्र बोलना चाहें वो, or if you want I can request friends one after another, so whichever way you think would be useful we will follow that. हुसैन साहब, आपकी क्या सजेशन है? मेरा ख्याल है कि शाह साहब, मेरा ख्याल है कि आप जो है, आपके पास नाम है। अच्छा, इंडिया से भी जो हमारे दोस्त शामिल हो रहे हैं, पाकिस्तान से भी जो शामिल हो रहे हैं, उनके नाम है। तो मैं और उनका नाम कुछ जो है, कुछ रैंडम आप बुलाते जाएं, और कुछ जो रैंडम शामिल हुए हैं उनको हम बाद में सुन लेंगे अगर कोई कुछ कहना चाहेगा। इफ्तिकार अहमद साहब आ गए हैं क्या? नहीं, इफ्तिकार अहमद नहीं आए हैं। मुशीर हसन साहब, आप 7 जुलाई की मीटिंग में नहीं थे और you are known to be a thinker and writer and political analyst. आप बताएं कि हम लोग, we individually and collectively, what can we do and what we should do? Offer your comments. Well, thank you, Shah Saab. This is a very auspicious occasion, and I would like to start by saying that the two countries are poles apart still, and there is a long way to bridge it. The negotiations that we've had in the past between the two countries are a distant dream, but the peace process is another matter, and that should continue. And the peace process is something which has been initiated for some time, and you've played a big role in this. And I think the time is ripe for it. There is always the time for peace, and understand what peace is. Peace must not necessarily follow a war, but this iteration, this no war, no win situation, this situation where we are not friends and we are
we behave like enemies. The peace process has a big role in this. And I think this is an opportune time for this. And I say this because you know that in Pakistan, when we have elections, India does not play a part in it, in our narrative, unlike what happens in India. This used to be in the past. For the past at least 3 elections, the vote bank from anti-India rhetoric has gone. And that may be for many reasons, but perhaps because we have our own problems and a lot of problems and personalities that keeps us preoccupied. But that narrative doesn't exist. So there is a mood, I would say, that is not, certainly not anti-Indian. I think from my reading, in India, in the elections particularly, this narrative is strong. And I think we have to start at looking at measures that avoid this, where we do not target each other to gain votes, and look at means that can bring peace. The second thing is the issue of Kashmir, which is a big issue for Pakistan, both in the governmental narrative, in the state narrative, and also in the minds of the public, remains at that. But there has been some changes, as you've noticed, after 2019. There was a strong reaction, and still that. But you will see that as time has passed, the narrative of the government is changing. And in the past, it was said in Pakistan that unless the 2019 changes are reversed, there can be no discussion. You would notice that at the last statement that the outgoing Pakistan Prime Minister gave, he invited India for talks, but did not mention for the first time the precondition of Kashmir. Now, I don't know if this can be read as said, but India hasn't given any positive response to that. But from my reading, that is quite a significant change. No, but the point is, it's okay to keep it. So, yes, please continue. So we need to look at that point and think about it. And if I was an Indian, I would look at it very carefully and certainly respond to that. Not make a big thing about it, because there is a big lobby in Pakistan that will not stand for it. But actually, this is something to look at. The issue of Kashmir remains and needs to be resolved. But we can start with confidence building measures. And from, as you know, from 2002 to 2006 and 2008, there was a peace movement. Some basic things were settled in a way and unofficially, that we will look at Kashmir itself, allow people in Kashmir to meet each other, have soft borders, and keep everything in the status it is. We're not looking at status change, but allowing people in India and Pakistan to meet each other, stop anti-Indian and anti-Pakistan rhetoric, and start through this. So we have to build a slow process to make it go forward. That's all I wanted to say. Thank you very much. Is Mr. Nijamuddin Bhatt there? No. He's not. He is there, but he cannot hear us. He cannot talk. Oh. His audio is not working. Brigadier Mukherjee, Sir, would you, from Calcutta, he is an activist. He used to be an army man. He retired long back. Would you offer your comments? How do we improve the relations between the two countries? Your thoughts on the subject. thank you, Shah Sahab. Thank you so much for having me on this show. Firstly, a very good evening to all participants and panelists in today's session. And I take this opportunity.
I must announce my arrival. Week. Now, money is there. Am I audible? Yes, Yes. Brigadier Sir, please continue. Okay, thank you. No, it was there. Let me take this opportunity to wish through this session organized by Mr. Shah to all citizens of both countries a wonderful and joyous Independence Day on the 14th and 15th of August. And in my own humble way, I'd like to also offer my compliments to Mr. O.P. Shah, the chairman for Center of Peace and Progress, who has organized this session today, for his very sincere and persuasive efforts. And may I also add, relentless efforts to find ways to improve relations between both countries. Indeed, he is an optimist, and I genuinely support his efforts and respect his intellectual wisdom. In the last couple of webinars conducted by the Center for Peace and Progress, most participants and speakers, both from India and Pakistan, raised acrimonious issues and deviated from the debate and discussion of suggesting ways to improve relations. Now, my humble plea is that in today's discussion, we concentrate on ways which are not, if I might use the analogy, my way or highway. Yeah, suggest one or two ways. Yes, my way or the highway suggestions that could be a possible way to break the deadlock and create an environment of engagement to improve relations. Now, I personally feel no quick fix and out-of-the-box options, but suggestions which will appeal to both the heart and mind of all sections of society of our two countries will work. Nobody can deny that the politicians and the governing establishments on both sides have compulsions in adhering to stated positions. In true sense of the term, my way and highway, they know that any deviations from the stated positions will make them a political outcast. I therefore propose the following baby steps, and I'm being absolutely practical, to both the countries to engage in dialogue to improve relations. Mr. Shah, I submit, A, encourage social activists, people like you, intellectuals and social influencers, to talk positively and affectionately about each other, about each other's society, citizens, and the country as a whole, both in social media, audio and print media, and on TV channels for a change. Don't target them as traitors and secessionists. Support their cause. I have noticed that some Pakistan bloggers are already doing this, and I congratulate them for their courage. At times, I feel they present a negative image of their own politicians and ruling dispensation, maybe to draw more eyeballs from across the border. But I would request them to project a more positive image of both sides. B, ensure by all means that the present no firing across the border by each side that has been in place for the longest period now holds. Immense goodwill has already been generated by this positive outcome. And the populace on both sides who carry out their agricultural and economic activities are more than happy because of this. It should hold. C, both ruling dispensations should make every effort to revive SAARC. I have been mentioning this time and again, Mr. Shah, that this is one umbrella that I do not know why suddenly it has been shelved. The Pakistanis would blame the Indians would blame the Pakistanis, the rest of the SAARC nations would either not comment or say in bated breath whatever they have to. But the fact remains, once SAARC is revived, we could discuss all issues under the SAARC umbrella, except, of course, issues which require bilateral discussions as per the negotiated settlements and instruments which are already in place. D, I would recommend that we resume sports and cultural exchanges without any preconditions. Next is that we upgrade embassies. Mr. Shah just now mentioned that the high commissioners in both the countries are not at the moment posted. This should be done, and the staff brought up to its full capacity as has been negotiated between both nations. Of course, there is a sense of insecurity felt by both these
staff and the ambassador and the high commissioners. Therefore, full protection and adherence to the Geneva Convention is a must. I would also mention that we should reduce bad-mouthing each other at international forums and platforms. I do not know how far this will be possible, because in political jargon, once you get onto the UN platforms and other platforms, I think the policy statements, there are compulsions. So therefore, I do not know how far this could be done. Now, the next is that the contentious issue of Kashmir, for the present, if you want to start a dialogue, engage, and slowly take baby steps to be better neighbors, then the issue of Kashmir must be put on the back burner till such time the SARC is revived and we come to the negotiating table and discuss everything under the sun. After all, there is no reason to suggest that nothing can be discussed. There are a host of other initiatives that can be initiated without resorting to tutu meme rhetoric, which can also be thought of. Top of the list would be resuming trade, transit of goods through each other's territories, and giving permission to overflying of civilian commercial aircrafts. Now, these are some of the things which, to me, without any difficulty, can be initiated. But I have my apprehensions. I do not know how the dispensations and establishments on both the sides would engage in this kind of a thing. It is people like you, Mr. Shah, and people on this panel today, they are the ones who have to reach out and, generate a thought process amongst everybody that this can be done. In the end, I would offer a prayer on behalf of all citizens of the continent, of the subcontinent. We are a family. We are brothers and sisters. We were divided in 47. There is no reasons to believe that Muslims and Hindus cannot live together. And I personally feel that this little baby steps that I have enunciated can be achieved. Thank you. Thank you very much. Thank you very much indeed. Dr. Iftikhar Ahmed, activist and writer. Please offer your comments in next 5 minutes. Thank you, Shasab. Thank you very much for continuing this effort. And in the same spirit as Brigadier Mukherjee has said, I think today is the occasion we should look what we have achieved since 1947. In spite of all the difficulties, both the countries. In both the countries, we look at how much the quality of life has improved as compared to 1947. Both the countries, there are infrastructures development, there are educations, there is the potential of the youth. Both the countries are quite young. The big part of the population is comprising of young people. While I agree with you that there are issues which are not going to be resolved today, but I fully agree that how can we improve people-to-people contact? How can we create that momentum that the policymakers on both sides can feel that pressure from the people to take baby steps? I agree with you. Maybe simple things like Brigadier Mukherjee has said, that we should stop bad-mouthing each other. Maybe we should look at the positive things which are there. That doesn't mean that we should keep our eyes closed from the magnanimity or the severity of the problems both these nations are facing. In the last session, Shasab, if you remember, I made a suggestion that whether we could have a similar meeting where we could look at why, in spite of all the efforts at different levels, why is it that when both the countries come closer to solving this problem, something happens and we take 2 steps forward and 10 steps back? Are there psychological issues?
which are still on the third generation since 1947, are still haunting us? Is it that on both sides of the border, the historical narrative which is being fed to our generations, which has created that mindset? I will not take much longer, accept this, that we should continue these efforts, and we should have a dedicated sessions to look at why is it that the people who are quite sincerely on both sides try to resolve, and there are so many instances that at the last minute something happens and we go back where we start. Sometimes I feel like we are what you call is travelers of the circles, that we go and keep travel in circles again and again and again and again. But I will finish it. Congratulations that we have come a long way, and we will go a long way, God willing. Thank you. Thank you very much. Gopi Kishanji Muju, Professor, please offer your comments. Professor Muju. Namaskar, sir. Namaskar. Please. Am I audible? Next 5 minutes are yours. Yes, Okay, sir. sir. You're audible. Okay, thank you. You see, the question is we have to work at social level, at society level, because politically they have not engaged with each other. They are biased. They have political compulsions. So it's very difficult for them to meet at a higher level. What we have to do is that both civil societies in Pakistan as well in India, we have to meet and create ways and means of facilitating trade, commerce. Now, fortunately, we have started. Sports has started. I think cricket, this hockey match has started. Cricket match is going to start soon, and we have to meet at that level. It is only when at that level we can meet that we can have improvement in election. Otherwise, what we are doing through papers, to other political speeches, we are only feeding negativism and animosity against each other, and nothing else. And whatever may the position, the question is that we have to go to the basic problem, basic issue. Somebody says keep it back burner. Maybe there's help, but it has been there. The basic issue of Kashmir has to be resolved, and for that dialogue is the only process. I feel that's basic. Unless we start some dialogue on that, because whenever you start something, both sides will come to the same issue. Pakistan start Kashmir issue, and you also know it is settled, which is not a fact. Because if that was settled, then what is this? What do we call it? POK, Azad Kashmir. What should be that? We decided the fate of that part will be decided. All those things. So the issue is there. We have to accept it. We can't deny reality. And if you don't go to the basic problem, the other offshoots, all the things are only offshoots of that very problem. And my style is always that you go to the basic problem, resolve that. If you're really sincere and want peace in the subcontinent, you have to go and talk to the problem. Tackle that problem with sincerity. And the solution always lies in the problem. It doesn't lie outside the problem. We have to exact. And all those things, and we can facilitate. By civil society can facilitate all these means. By trade, by commerce, but also. And as I put out just now, that we don't have any high commission in each other countries. We can't meet at that level. At least that could be resumed. And SARC has been put forward by a speaker should be revived, where we can meet and discuss mutual issues. And there must be sincerity on both sides that we really mean. And unfortunately, Pakistan is in a very bad shape from time to time, which gives a hand to India. Just we can't do anything because government do. Should we talk about all those things? Those can be lame excuses. But if you are sincere, we can talk with anybody at any level and start a negotiation dialogue on all issues, and basically the issue being the Kashmir issue. That's my contention. And all those other things are a means to reach that level, whether trade or commerce or sports or cultural meetings. You see, because of this problem, so much of animosity has come up that we don't have any cultural meetings. Sports have been, I'm saying, religious political animosity. Culture we don't meet. Trade and commerce have been affected. Our high commissioners are all blocked. And what is this relationship as we two neighbors? These definitely things have happened very bad in the past.
And if we don't continue, if we don't, strive to reduce the tension, these will improve because everybody will have to his own, excuse to further it. The Pakistan is under tension today, have its own problems. India is going to have election next year. So naturally, we won't, they will have like, no talks, possible. But you have to find a way out and meet each other's needs and aspirations. Because of the people are suffering, the common man is suffering, politicians are not suffering. The people in Hello, they are not suffering. They are only, they are virtually afraid of talking to each other. But a common man is suffering. See the people of PH and this J&K who are separated. They are famed for the last 70 years. What is happening? They are separated. They are suffering relation. We can't meet each other. I would like to go to Pakistan, see old places there. I can't go there. The common man who is suffering, so a common man has to play his role. Otherwise, politicians will never solve a problem because it is their job to continue with the problems and let people suffer, and then it's there. They are handicapped. They are all compulsions. Because with their own compulsions, they feel handicapped, they can't move out of the groove which has caught them up. But common man of civil society has to wake up, and we have to find out at common man's level how we can interact. We can have meeting of civil societies, as Shah Sahab is arranging it here. We can have where people from India, Pakistan, and all those things. We can have physical meetings also. There should be no difficulty in having physical meetings, arranging visas for several people who are well intentioned. I don't think any government should refuse visas to those people, and we can go and meet in the physically meet and we can convince people. These audiovisual agreements are all right. We can have these things either. But physical meeting, seeing each other, talking to each other, because after all, what is more important is the emotional impact of each other's talks. When we meet a brother from other side, when we are friends from other side, it's a different impact. And physical meetings should be also encouraged at every level possible. And that includes, as I always say, trade, commerce, sports, cultural meetings, literary festivals. But unfortunately, those two have become victims of our political animosity. And the basic thing is the Kashmir issue. And you have to address that problem. And you can't keep it all this at the back burner. It may just not go so much big, called so basic, but you have to address that because unless one side says yes, because India doesn't talk about it, but Pakistan is a sharak. It's a regular way for Pakistan. So now how can you meet? Once one side, this is the contention. You address it. At least sit down and talk on the table. Let there be a disagreement over the agreement. Let there be agreement over the disagreement. But let there be discussion. But we don't even discuss the issue. We avoid. What's the compulsion to avoid? I fail to understand this part of it. That compulsion has to be broken up. We have to talk about the problems there. And all other things are only basically offshoots and fallout of the basic problem of Kashmir. We have to accept this part of it. And I've been always saying this thing. Resolve the basic issue. Other things automatically go away. Those are other problems of basic issues, Kashmir. And whatever the factors be there, who's responsible? Whether Pakistan was responsible in 47 to attack Kashmir, or anybody else was responsible, different thing altogether. Now the issue is there. Let us see, the elephant is the room. So let us see how to tackle it. 1/3 of Kashmir is with Pakistan. Decide about that part of it. You say, no, Pakistan, Kashmir should resolve. How is it? 1/3 is with Pakistan. Resolve that issue. This way or that way. You are having CZY, you are NOC, you don't have IB there. You have UNO groups here, and you can't deny those groups are not there. The issue is in the books of your nations. You can't deny the reality. It's only political camouflage that you do this thing, that thing, all those things. That is only deceiving ourselves and creating problems for future generations, and then creating problems for future generations. And this 70 years, 3 generations go on all these things. How long do you want to go in them? India fought freedom, started freedom struggle 1857. After 9, we got a freedom. Do you want to have same thing here also? After 100 years to solve the problem. But the longest issue in the nations also. So we have to address basic issue, and then automatically other issues will be resolved amicably. This is my opinion about it, and all the measures which have been studied other speakers, cultural meetings, trade unions, all those things are very essential. They may help, and civil society has to take a lead in all the directions, and physically interested people, well-wishing people, sincere people from both sides of
IB, LOC, and also India and Pakistan must meet physically and discuss this. And such those things must be regular. Meetings, political meetings may be regular at civil level. Let politicians meet later on, but we create an atmosphere at the civil level by meeting each other physically and discussing all those issues. This is my sincere feeling. Though a lot can be said more about it. And recently, in fact, I have put in my own paper, dialogue is the only way out, which I published it, because I've been always saying dialogue is the only way out. There's no other other alternative. Thank you, sir, very much. Thank you very much indeed. May I now request Mr. Arshad Bhatt? Mr. Arshad Bhatt, जी जी आवाज आ रही है please offer your comments जनाब शुक्रिया in शाह about साहब 4 or 5 minutes. Yeah. जी जी मैं एक हल्के फुल्के अंदाज में शुरू करना चाहता हूं मैंने कल ये एक फिल्म देखी है गदर 2 इंडिया में उसकी बड़ी धूम है यहाँ पे भी लोग देख रहे हैं वो पंजाब के क्रॉस बॉर्डर दोनों पंजाबों की कहानी है उसमें हीरो एक सिचुएशन में ये कहता है कि इधर दे लोग भी तो उधर दे लोग भी यानी कि दोनों तरफों के लोग आपस में मिलना चाहते हैं अमन से रहना चाहते हैं मगर पॉलिटिशियंस को क्या हो गया है ये इनको क्यों नहीं मिलने देते तो मेरा ये कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम वसी तर अवाम उसमें मैं किसी छोटे मोटे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की बात नहीं कर रहा कोई रिलीजियस ग्रुप्स या सो कॉल्ड फैनेटिक्स और अमूमी तौर पर बहुत अक्सरियत अवाम की पंजाब की पख्तूनख्वा की बलूचिस्तान की सिंध की ये हिंदुस्तान के साथ दोस्ती में रहना चाहते हैं और मेरा ख्याल है इसी तरह हिंदुस्तान के अवाम पंजाब के या पूरे हिंदुस्तान के वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती में रहना चाहते हैं मगर इसमें गुजारिश ये है कि हमारे पास का बहुत ज्यादा बैगेज है जो हम कंधों पे उठा के चलते हैं हम जब भी गुफ्तगू का आगाज करते हैं तो हम हिस्ट्री को की तरफ चले जाते हैं मेरा ये कहना है कि हमें आज से शुरू करना पड़ेगा अगर हम माजी में पास्ट में धुसे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते आज से चलने से मुराद यही नहीं कि जो डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं उस पर आप बात नहीं कर सकते उस पर आप डायलॉग नहीं कर सकते बिल्कुल जरूर डायलॉग करें उस पर मगर अगर आप यह कहेंगे कि हमने 4 जंगें लड़ ली हमने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी कर लिया मगर उससे निकला क्या जंगों से पाकिस्तान इंडिया के पास जो कश्मीर है उसको कब्जे में कर सकता है ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को पता है कि ऐसा कभी नहीं होगा पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है हिंदुस्तान जंग से वो कश्मीर अपने साथ शामिल कर सकता है उनको पता है कि ऐसा कभी नहीं होगा तो फिर इसका हल क्या है कि आप डायलॉग पे आए मगर ये डायलॉग पे नहीं आना चाहते उसमें मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट जो है या डीप स्टेट्स जो हैं वो अपने तय कश्मीर का मसला हल करके बैठे हुए हैं उन्होंने कश्मीर का मसला हल कर दिया हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सियासी एलीट जो है शराफिया जो है वो भी मेंटली कश्मीर का मसला हल करके बैठे हुए हैं कि वो कश्मीर हम नहीं ले सकते ये कश्मीर तुम नहीं ले सकते मगर इनमें पॉलिटिकल विल नहीं है कि इस बात का खुल के इजहार करें हमें पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को पाकिस्तान की स्टेट को और हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को स्टेट को पॉलिटिकल विल का मुजाहरा करना पड़ेगा मेरा ख्याल है कि लास्ट टाइम जो पॉलिटिकल विल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से दिखाई गई वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी और जनरल मुशर्रफ की थी जिन्होंने कश्मीर के मसले को काफी हद तक डायलॉग के जरिए हल करने की तरफ पहुंच ही गए थे खुर्शीद कसूरी उसको लिख चुके हैं कई बार आपके प्रोग्रामों में इसका बात भी कर चुके हैं तो हमें 2-3 बातों पे इस फोरम से ये बात करनी चाहिए नंबर 1 सबसे पहले तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने हाई कमिश्नर का तबादला करें आज अगर इजराइल और पूरा मिडल ईस्ट आपस में सफारत खाने खोल सकते हैं आपस में सफारती ताल्लुकात कायम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते सबसे पहला मुतालबा
पाकिस्तान के अवाम को ये करना चाहिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपना हाई कमिश्नर भेजें और अपने ताल्लुकात ठीक करें। दूसरी बात जिसको इस प्लेटफॉर्म से हमें आगे बढ़ाना चाहिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान सार्क को रिवाइव करें। इनकी आपस की चपकलश जो है, इनकी आपस की ये जो दूरियां जो है, डायलॉग ना करना जो है, एक बहुत बड़ा रीजनल इकोनॉमिक जोन जो है उसको मुतासर कर रखा हुआ है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान, इन सारे बांग्लादेश, ये एक बहुत बड़ी कॉमन इकोनॉमिक मार्केट हो सकती है। और मेरा कहना यह है कि आज की दुनिया में कोई अकेला मुल्क तरक्की करना, अपने अवाम को खुशहाली देना मुमकिन नहीं है। रीजनल इकोनॉमिक हमें क्या कहते हैं, ग्रुप्स या तंजीमें खड़ी करना पड़ेंगी, और साथ उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसकी बुनियाद पे हम आप अपने इख्तलाफत रखें। अगर चीन अमेरिका के साथ ताइवान पे इशू को एक साइड पे रख के अपना प्रिंसिपल स्टैंड रखा हुआ उसने, मगर उसकी ट्रेड होती है, कई सैकड़ों बिलियन डॉलर की ट्रेड होती है। हिंदुस्तान और चाइना के डिफरेंसेस भी हैं, कई सैकड़ों बिलियंस की ट्रेड होती है। पाकिस्तान और इंडिया अपना प्रिंसिपल स्टैंड रखें, मगर ट्रेड शुरू करें। पाकिस्तान पंजाब के जो है हमारा गरीब किसान, हमारा गरीब मजदूर, उसको सस्ती इंडियन चीजें मिले, इसी तरीके से हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मिले। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की मार्केटों में पहले माल एक्सपोर्ट होकर दुबई में जाता है, दुबई से वापस पाकिस्तान आता है इंडियन माल। इसी अंदाज में पाकिस्तानी माल दुबई जाता है और फिर इंडिया आता है, दुगने मोल हमारी मार्केटों में बिकता है। तो हमें ट्रेड फौरी शुरू करनी चाहिए, डायलॉग तो उसकी बुनियाद है। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदान भी ये समझ चुके हैं और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ये समझ चुकी है। वो करतारपुर की कॉरिडोर का खोलना इसका वाज़ेह सबूत है कि वो डायलॉग की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और हिंदुस्तान की अगर ये सरकार इलेक्शन के बाद रहती है या नई सरकार बनती है या पाकिस्तान में कौन सी सरकार बनती है, इनको एक नए दौर का आगाज करना चाहिए। अगर इन्होंने अब भी नए दौर का आगाज ना किया तो हमारे मुल्क के तमाम दोनों मुल्कों के अवाम के लिए खुशहाली देखना जो है वो एक सदी 75 साल गुजर गए, 75 ईयर्स, एक सदी भी हमारे देखते देखते गुजर जाएगी, हम नहीं होंगे, मगर हमारी आने वाली जनरेशन 100 साल के बाद भी कहेगी कि हमने क्यों इतना वक्त जाया किया। 100 साल के बाद हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान को अंग्रेज से आजादी दिला दी, मगर हम आपस में मिल बैठने को तैयार नहीं होंगे अगर 100 साल के बाद। तो फिर ये फैज साहब कह गए थे, ये दाग दाग उजाला, ये शब्द गजीदा शहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब्द गजीदा शहर, आगे भूल गया है। ये वो शहर तो नहीं। ये वो शहर तो नहीं। हाँ, ये वो राहों लेकर चले थे, थैंक यू चले वेरी थे मच जिसके लिए चले वो थे शहर तो यार नहीं। की मिल जाएगी। for your हाँ, मिल जाएगी comments. कि बहरहाल जी हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हम आप जैसी आवाज इंडिया में, हम जैसे लोग पाकिस्तान में यहाँ पे हैं जो ये बात करते हैं और बात करने को तैयार हैं। और पाकिस्तान में आप देखें, ये शायद मुशीर साहब ने कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में यानी कि इलेक्शंस का इशू एंटी इंडिया नहीं है, और ये इस इलेक्शन में नहीं, पिछले इलेक्शन में भी नहीं था, उससे पिछले इलेक्शंस में भी नहीं था। पाकिस्तान के किसी इलेक्शंस में एंटी इंडिया पहले एजेंडे पे किसी पार्टी के सियासी एजेंडे पे नहीं है। अब 1000 साल तक जंग करने की बात जो खत्म हो चुकी है, इसलिए एंटी इंडिया सेंटिमेंट पाकिस्तान में तो नहीं, मगर हमारे पाकिस्तान में भी है मजहबी इंतहा पसंदी, एक सूडो एक्सट्रीम नेशनलिज्म भी है, इंडिया में भी है मजहबी इंतहा पसंदी, सूडो नेशनलिज्म भी है। इसके खिलाफ लड़ना भी, आवाज बुलंद करना भी हमारे जैसे लोगों का काम है। इसके बाद बात आगे चलती रहेगी, फिलहाल इतना। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका। निजामुद्दीन भट्ट साहब फ्रॉम श्रीनगर, प्लीज ऑफर योर कमेंट्स प्लीज। शाह साहब, आपका शुक्रिया जो आप कोशिश कर रहे हो, जो दबे हुए ख्यालात हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जहां हम एक्सप्रेस कर सकें, वेयर वी आर एक्सप्रेसिंग टू। So nice of you. I was unfortunate, there was some fault in my phone. I could not
join you from the outset, and most of the views, almost all the views, those have been expressed, मैंने बिल्कुल सुने नहीं. लेकिन इसमें सुनने की जरूरत भी नहीं है, because issues are identified. Conflict या controversial contesting issues भी, या छोटे बड़े issues जिसमें ज्यादा controversies नहीं है, जब से इमरजेंस हो गई है 2 मुल्कों की आजादी के बाद, तब से तो वो इश्यूज आइडेंटिफाइड हैं और बातें भी बहुत हुई हैं. देयर हैव बीन एग्रीमेंट्स, देयर हैव बीन डायलॉग्स, देयर हैव बीन spells of bonhomie, there was distress too, there were wars also. This is all history. I don't know, there is dearth of ideas if we try to find out why India, Pakistan have been together and why they were ripped apart. What happened? What were the issues that they don't go beyond a certain point for? And what are the issues they were ready to resolve? ट्रेड भी हुआ बीच में, सॉफ्ट बॉर्डर का भी आइडिया आया, और सॉफ्ट बॉर्डर एक्चुअली दैट हैपेंड जब मुजफ्फराबाद रोड खुल गया, 2 पार्ट्स जो कश्मीर के हैं, ट्रेड भी हो गया, या जो डायलॉग्स हुए, वहां के सरबराह आए, यहाँ के सरबराह गए, लोगों में उम्मीदी भी बंधी. व्हाट आई मीन टू से कि there is nothing that we can add to where the 2 countries have failed and why have they failed. Exactly. And there is also no saying on this ki 2 countries must come together. They must cooperate with each other. They must be together the global players. This is a subcontinent with a vast potential. And India and Pakistan have been representing since age a civilization too. Not that they were economically viable potential, not that they were diplomatically also over the hump at times, not that politically the people or the governments were not mature. Where do we go wrong is that one issue, one simple issue, that's Kashmir, that's always divided India and Pakistan. One. And one another reality. There's many people here or there never accepted the partition on ideological lines, particularly on religious lines. These things snowballed at times into controversies where people confronted, where governments confronted, where armies confronted. This is, I should say, destiny going against both the countries. Having independence dawned on them after so much of mutual sacrifices offered together collectively. Having seen so much of dreams, having thrown to people an awareness that they are, वो एक नई सुबह की तरफ अब जा रहे हैं, and we have seen later on bloodshed. We have seen later on hatred. We have seen each other's resentment. We were eyeball to eyeball. We even got down to a maligning campaign against each other, not accepting the existence of each other at times. This is unfortunate. There was an idea in the last meeting which we had at Delhi that some think tank at people's level should emerge that would consolidate on collective feelings of the people of both countries. That would build on the opinions about us across the borders. That would help facilitate governments to come down to something where they could come together and sustain. Unfortunately, I am not in a position to say that disputes which were the core issue should emerge again as core issue, because both governments have at times come to a reconciliation.
where there were gestures that we can compromise. Until and unless two peoples and two governments with a will and public mandate do not sort out where the shoes pinch. 1. 2. Do not go towards that kind of a settlement or that kind of a resolution or that kind of confronting the major issue. They do certain pro-people measures. Trade should not have stopped. Economic cooperation should not have stopped. Exchanging diplomatic pleasantries should not have stopped. Allowing two peoples to hug each other, that should not have stopped. The idea of total integration of both people to a civilization they were wedded to, that should not have stopped. For either in the name of electoral gains or in the name of national securities. What I want to say, as an ordinary citizen from an area who have been sufferers of this confrontation, who are the victims of this confrontation, whose culture, civilization has been ripped apart because of this confrontation, who recall with pain the memories about their own people who have suffered so badly and are nowhere now mentioned. Do we feel happy that dissent voices here or there are under coercion? Do we feel happy that as an outcome of confrontation of two countries, that there are laws which would never exist in a democracy, which would never exist even in autocracy, and those laws are applicable to people of the two nations? Are we sufferers of civilization? Are we sufferers of our own culture? Are we sufferers of our own thinking approach? Are we sufferers of destiny? Are we sufferers of failures on our part to think positively? Can't we exist as two countries happily, co-opting each other? Why spend energy, money, ethos, values at the altar of our own egos, our lack of will, our petty interests, electoral interests, or a bias, a prejudice that countries should not have existed in the name of religion? A Muslim country emerged. Now we have voices that there should be a parallel to any religion. Is that good? That's not happening to us as a civilization. Should not happen to us. So the ideas are galore. The history is replete with lessons. The mutual areas of confrontation or conflict or reconciliation are recounted so easily. What we need, the two peoples enforce their will on two governments to live together, to live in peace, to live in collective civilization, and to see the dreams of going ahead, rising to the skies. Thank you very much. Thank you very much, Nijamuddin Bhatt Sahab. Nijamuddin Bhatt Sahab, everyone knows, was a member of the Jammu and Kashmir Assembly. He's a well-known writer and well-known journalist and a great thinker. Thank you, Nijamuddin Sahab, for your comments. May I now request Haq Sahab to offer his comments. Husam Haq Sahab from Pakistan or anyone else from Pakistan.
मेरा Whoever ख्याल wants है to. मेरा ख्याल है मुझे तो आप लोग भी साहब रहे हैं। आपकी आवाज साफ अभी नहीं है। हमारे दरमियान बैठे हैं हसन जाफर जैदी साहब, पहले लाहौर से हसन जाफर जैदी। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम उनको सुने तो जरूर जरूर। हाँ तो हसन जाफर जैदी साहब, आखिर में please, may I now request Jafar Jadid Saab to offer his comments. He is from Lahore. Jadid Saab, please. जी जी ओपी शाह आपके साहब, कोई थैंक यू। इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। Everyone knows you in subcontinent. Please go ahead. जी बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने मुझे गुफ्तगू में शामिल किया। बहुत अच्छी बातें दोस्तों की तरफ से हो गई हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। 2012 तक पीपल टू पीपल कांटेक्ट में काफ़ी पेशरफ्त हो रही थी। मैं और हमारे साथ जहाँ अभी इसमें शामिल भी हैं खालिद महबूब साहब, डॉक्टर मुबशर हसन साहब और राइया रहमान ने एक डेमोक्रेटिक पीपल्स फोरम ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप दोनों मुल्कों के दरमियान शुरू किया था, आपको मालूम होगा। हाँ जी। उस सिलसिले में दोनों मुल्कों के डेलीगेशन आते थे जाते थे। 2012 के डेलीगेशन में मैं भी गया था इलाहाबाद, और वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट वाली एफर्ट अच्छी चल रही थी। लेकिन 2014 के बाद जो चेंज आया है, खास तौर से इंडियन रूलिंग पार्टी का, उसके बाद से वो प्रोसेस बड़ी तेजी से डिरेल हुआ। हैविंग सेड दैट, मैं थोड़ा सा मुशीर हुसैन साहब और अरशद भट्ट साहब ने जो बात कही है उसको फिर से रीएम्फसाइज करूंगा कि जो एंटी इंडियन रेटरिक हुआ करता था कभी, आज से 2-3 डेकेड पहले, वो अब बहुत हद तक पाकिस्तान में सबसाइड कर गया है। गजवा हिंद, दिल्ली के लाल किले पे झंडा लहराएंगे और लश्कर तैयबा, अब यहाँ लोगों में पॉपुलैरिटी आम पब्लिक में लेने के लिए ये अब स्लोगन उस तरह नहीं रहे जैसे एक ज़माने में होते थे। लेकिन हुआ ये कि 2014 के बाद से जो बीजेपी की सरकार आई है उसका तो मेन जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, वो खास स्टेट के इलेक्शंस हो खास सेंटर के इलेक्शंस हो, उनमें सबसे अहम एजेंडा जो है वो पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम होकर रह गया। और खुशी की बात यह है, अगरचे ये अफसोस की बात है, लेकिन उसको काउंटरैक्ट करने के लिए जो आपका सिविल सोसाइटी है, स्पेशली आपके ऐसे एंकर पर्सन्स या ऐसे आपके मीडिया पर्सन जैसे रविश कुमार हैं, आकाश बैनर्जी हैं, अजीत अंजुम हैं और बहुत से हैं, जो कि पूरी एफर्ट कर रहे हैं कि इसको इसके बारे में आवाज़ उठाएं। और बहुत से जो सिविल सोसाइटी के आपके सर्कल्स हैं उनकी तरफ से इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाती है। अल्दो जो भी ये आवाज़ उठाता है उसको फिर एंटी नेशनल का टाइटल दे दिया जाता है, हमारे यहाँ भी ये दिया जाता है। ये जो सिलसिला बना है 2014 के बाद से, इसकी एक तो लोकल डायमेंशन है कि आप लोगों के रिलीजियस फीलिंग्स को उभारें। फिल्में बेताशा बनी हैं पिछले 8-10 साल में, जिसका रेटरिक जो है मेनली वो एंटी मुस्लिम है या एंटी पाकिस्तान है। अभी रिसेंटली आपके यहाँ फिल्म बनी पठान, वो आईएसआई और रॉ के दरमियान, जैसे एक ज़माने में केजीबी और सीआईए के दरमियान हुआ करता था, जेम्स बॉन्ड की फिल्में उस अंदाज से हुई हैं। उसमें एक और डायमेंशन मैं मेंशन करना चाहूँगा जिसका अभी तक दोस्तों ने जिक्र नहीं किया, वो है जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, जो हमारी जियो पॉलिटिक्स में रीजनल अलाइनमेंट्स हैं। उनमें जो एक इंडिया बीइंग ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूएसए, उसने भी इसमें काफ़ी
मामलात को ख़राब किया है। although एक ज़माने में पाकिस्तान भी उनका बड़ा स्ट्रेटजिक पार्टनर था और आज भी है, लेकिन उसमें इस वक्त इंडिया को जो हैसियत हासिल हो गई है, जो कि कोल्ड वार के पीरियड में उस तरह नहीं थी। इंडिया बैलेंस करके चलता था, अभी भी बैलेंस करता है कंपेयर टू पाकिस्तान। लेकिन जो भी इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन या एंटी मुस्लिम या जो भी वहाँ पे सिलसिले चल रहे हैं, उस पर वेस्ट और जो यूएस की गवर्नमेंट्स हैं उनकी तरफ से एक तरह की सरपरस्ती है। मुझे तो हैरत होती है कि अगर ट्रंप जो है वो अहमदाबाद में तकरीर करते हुए जो है वो अपनी स्पीच के अंदर जो आर्य समाज तहरीक के बानी थे उनकी तारीफें करता है और इस तरह की चीज़ें। तो ये जो पिछले 10 साल का फिनोमेनन है, इसने हालात को एक ऐसे नहज पर पहुंचा दिया है जहां मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में तो जो एफर्ट इस टेंशन को दूर करने के लिए पाकिस्तान की साइड पे हो रही हैं, अब मैं समझता हूं कि इंडिया की साइड पे इन हालात में उन एफर्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत बन जाती है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है, बहुत ही एक्सट्रीम पर पहुंच गया है। अब वो राम मंदिर की तामीर होने वाली है। अब मैं कश्मीर पे आ जाता हूँ। अब आर्टिकल 370 पर आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर सुनवाई शुरू हो रही है। एक तो हैरत की बात यह है कि ये 4 साल के बाद अब हो रही है और गालिबन वो स्टैम्प कर दिया जाएगा, उसको लीगल अप्रूवल उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी जाएगी, ताकि अगले आने वाले इलेक्शन में मोदी अपने कैप में एक और पर जो है वो लगा लें। तो कश्मीर के इशू पर बहुत उम्दा गुफ्तगू की निज़ामुद्दीन भट्ट साहब ने कि जितना सफ़र कश्मीरियों ने किया है वो गालिबन इस पूरे खित्ते में या तो 47 की पार्टीशन के बाद पंजाब के दोनों तरफ के लोगों ने सफ़र किया था और या फिर कश्मीर के लोगों ने किया है। तो इस हवाले से मुझे याद आता है कि जब आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई है तो नोबल लॉरिएट अमर्त्य सेन ने जितना स्ट्रांग उस पर बयान दिया था, गालिबन दोनों मुल्कों के किसी भी पॉलिटिशियन ने उतना स्ट्रांग बयान नहीं दिया था। अमर्त्य सेन का बड़ा मजबूत एक इंटरव्यू आया था। इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता दबती जा रही हैं और जब 370 को अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद देखने की बात है कि कश्मीर का मसला क्या रुख इख्तियार करेगा। क्या ये जो पाकिस्तान में जिस एजेंडे के तहत रिजीम चेंज हुई है उसके नतीजे में जो नए कुछ एग्रीमेंट्स करवाने की कोशिश होगी कश्मीर के हवाले से, इसको डाइल्यूट करने की या जो भी, उस पर कश्मीरी अवाम का रिएक्शन क्या होगा। क्या कश्मीरी अवाम आर्टिकल 370 की रिवाइवल की बात करेंगे, कोशिश करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मान लेंगे जिसमें इसकी एब्रोगेशन को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाएगा। आखिरी बात मैं करना चाहूँगा सार्क के हवाले से। सार्क में के फोरम पे मैं काफ़ी एक्टिव रहा हूँ, बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एनर्जी का मेरा जो है वो शोबा है। तो मैं सार्क एनर्जी सेंटर की जो कॉन्फ्रेंसेस होती रही पिछले 2017 तक, उनमें मैं एज ए रिसोर्स पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता था। दिल्ली में आया 2017 में या 18 में गालिबन, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, अफगानिस्तान में। और वो बहुत अच्छा फोरम था जिस पर हम एक तो ये कि सब मुल्कों के मेंबर्स आपस में मिलते थे, बैठते थे, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता था। उसमें सिर्फ हम बिजली या एनर्जी के मंसूबों को ही डिस्कस नहीं करते थे, मुख्तलिफ बाकी बातें भी हुआ करती थी। बहुत अच्छा एक मेल जोल का सिलसिला था। उसकी रिवाइवल होनी चाहिए। सार्क की रिवाइवल के बारे में दोनों मुल्कों की तरफ से, सिविल सोसाइटीज़ की तरफ से, डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स की तरफ से आवाज़ें उठनी चाहिए और उसमें बहुत ही अच्छे पहलू हैं। अभी आजकल मैं जिस कंपनी, जो मेरी कंसल्टेंसी कंपनी है, हम नेपाल में काम कर रहे हैं। तो नेपाल और इंडिया के दरमियान पावर एक्सचेंज के बड़े अच्छे मंसूबों पे काम हो रहा है। इस तरह के जो पावर एक्सचेंज के, एनर्जी एक्सचेंज के मंसूबे हैं, उनमें नेपाल और बांग्लादेश के दरमियान कोऑपरेशन हुई है। अभी रिसेंटली एक मुआहदा साइन हुआ है
जिसमें नेपाल कोई तकरीबन 500 मेगावाट पावर एक्सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को। तो वो रीजनल रिसोर्सेज को यूज करके ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दोनों तीनों साउथ एशिया के जो ममालिक हैं वो आपस में ट्रेड के जरिए, एनर्जी एक्सचेंज के जरिए और बहुत सी चीज़ों में कोऑपरेशन के जरिए एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि आप कश्मीर के इशू को बैक बर्नर पर रख दें, मैं नहीं समझता। हमारे कुछ स्पीकर्स ने भी इसके बारे में राय दी है कि जो कोर इशू है उसको रिजॉल्व करना चाहिए। और उसके अलावा जो मैंने इंटरनेशनल डायमेंशन का जिक्र किया है, हमारे दोनों मुल्कों के अवाम की जो फोरम्स हैं उनकी तरफ से हमेशा से आवाज़ें उठती रही हैं कि हमें बैरूनी आकाओं के नहीं बल्कि अपने मफादात के हवाले से चलना चाहिए। आज हिंदुस्तान में भी ये आवाज़ उठती है, बल्कि वहाँ पाकिस्तान की मिसाल दी जाती है कि अमेरिका का एलाई या होने में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ है जो हिंदुस्तान को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये 2-3 पहलू हैं अहम मेरी राय में, जिन पर बात होनी चाहिए और आगे हमें बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मुजफ्फर शाह फ्रॉम जी श्रीनगर। जी, मुजफ्फर आदाब। शाह साहब। जी हाँ, जी हाँ, जी शुक्रिया। थैंक यू ओपी शाह साहब। इट वाज अ वेरी, अभी तक जो डिस्कशन हमने सुना है यहाँ से, हमारे जो लोगों ने कहा है और खुसूसन जो हमारे पाकिस्तान से जितने भी हमारे भाई इस वक्त इस प्रोग्राम में हैं, एक तो मैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ और यहाँ सब लोगों को आदाब। और दोनों कंट्रीज का 14 और 15 अगस्त का जो बहुत बड़ा दिन है, सबको ये मुबारक है, हम सबको चारों तरफ से। और इसी तरह जो कोशिश है शाह साहब की, आइंदा इंशाल्लाह कभी ना कभी तो रंग लाएगी जरूर। और जो भी मैंने अभी तक सुने, ब्रिगेडियर मुखर्जी साहब को, मुशीरुल हसन साहब, डॉक्टर इफ्तिखार साहब, अपने जैदी साहब और मुज्जू साहब वगैरह, इरशाद साहब, बात एक ही नुक्ते पे आती है कि हम जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करते जा रहे हैं बहुत सालों से, ये रंग क्यों नहीं लाती है? Why doesn't it come to some positive conclusion? उसमें सजेशंस भी आप सब लोगों ने दी। हम भी कश्मीर से इसको बहुत बारीकी से देखते हैं। और एक बात बहुत जो वाज़िह तौर पे सामने अब आ रही है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला बेसिकली बहुत डीप इफेक्ट करता है पंजाब को, कश्मीर को, और जो थोड़ा से पख्तून एरिया वगैरह आपके उधर से आता है। हमारा जो डिवीजन है आपस में, जो सोसाइटी का डिवीजन, हमारे घरों का डिवीजन, वो गांवों का डिवीजन, भाई और बहन का डिवीजन। इस डिवीजन के बारे में कोई ना कोई फैसला लेना बहुत जरूरी है अगर हमको एक परमानेंट पीस और सोल्यूशन चाहिए between both India and Pakistan, with the blessings of the people of the areas which are the principal sufferers of this problem. ये एक बहुत वाइटल पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट अहम है और वो ये, can you hear me? Yes. Yes, yes. Because we went off the screen. दूसरी एक इसकी, जैसे हमारे एक अभी जो इसके पहले जैदी साहब भी फरमा रहे थे, हर किसी हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, they all want peace between the two countries. We want trade between the two countries. It's high time. And dialogue is the only way out. उसके बगैर कोई चारा ही नहीं। हमारे एक साथी ने अभी कहा जी हमारे डीप स्टेट वाले दोनों, उनने मामला तय भी किया है और शायद चाहते भी नहीं है या चाहते भी हैं। मैं उनको उतना बता दूं कि जो हमारे डीप स्टेट वाले हैं, चाहे आप वाले हैं, यहाँ वाले हैं, आपस में बहुत गहरे दोस्त हैं। ये बात पक्की है। They know exactly what's going to happen or what's not going to happen. And और वो अपने दोनों ममालिक के जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं, they could play a very, very great role in ensuring that, look, enough is enough.
और सबसे अहम बात यह है, ट्रेड हमारा शुरू हो, क्रिकेट शुरू हो, कल्चरल एक्सचेंज शुरू हो, और जो हम अब ये वर्चुअल ये मीटिंग्स कर रहे हैं, जैसे हमारे एक साथी ने कहा वर्चुअल मीटिंग्स ऑल ओके, शाह साहब इतनी कोशिश कर रहे हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं, फिजिकल मीटिंग इज अ मस्ट। और जो एक कोर ग्रुप की सजेशन भी आई है, शायद निजामुद्दीन भट्ट साहब ने दी या किसी और मेरे साथी ने दी, वहां पे हमारे पैनलिस्ट ने दी, बहुत अहम है, ये एक बहुत बड़ी एक सजेशन है दैट अ कोर ग्रुप शुड बी फॉर्म्ड which can travel deep into both the countries, which can meet with the powers to be, after all, अगर हम कितनी भी कोशिश करें, जब तक आपके पास आपकी रुसवाई जो हुकूमतें चला रहे हो या जो ऑपोजिशन के मेन लोग हों, अगर उन तक नहीं है, तो आपका जो अप्रोच है, जो आपका कोशिश है, जो आपकी कोशिश है, वो शायद रंग नहीं लाएगी। इसलिए मैं दो चार बातें जो आप लोगों सबने की, उनकी तायीद करता हूं कि नंबर एक, जो हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, उनको वापस एज दे वेर अर्लियर टू द लेवल ऑफ द एम्बेसडर्स एंड ऑल, दैट इज नंबर वन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर दो, जैसे हमारे कहा कि सार्क के लिए बहुत कोशिश होनी चाहिए, वो तो हमारी और आपकी कोशिश हम कितनी भी करें, वी कैन एट बेस्ट we can say okay, एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट होता है, बट इट्स अल्टीमेटली द पॉलिटिकल बॉसेस that have to take the call on this। और चूंकि अब दोनों ममालिक में इलेक्शंस का मामला है, we will have to also wait for what is going to be the new power structure in both India as well as Pakistan। So physical meetings, revival of our diplomatic offices, SARC तो छोड़ दीजिए, that is for the new governments to see। It is a very, very, very healthy and a very solid platform। But in the meantime, what could happen is that our travel restrictions somehow should be eased out, so that जो हमारे ग्रुप्स हैं, जो सही मानों में समझते हैं कि नहीं, हमने जो 47 से आज तक हमने तबाही और बर्बादी के सिवा इस खिते में कुछ देखा नहीं है। वीव सीन वॉर्स एंड ऑल, और अगर अल्लाह ना जात दे और अग्री वॉर हो तो तबाही मचा देगी पूरे दोनों ममालिक में। इसलिए कीपिंग कश्मीर ऑल्सो, दैट्स वन ऑफ द मेजर इश्यूज। हमारा मानना ये होगा कि साहब कि इस मामले को दोनों ममालिक बैठ के इसको सही करें। और हमने एक कोशिश की थी, मेरे अपनी लेवल पर इन 2001, अगर कुछ लोगों को यहाँ पे उस चीज का इल्म हो, उस वक्त वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और पार में जनरल मुशर्रफ साहब थे। We had come up with something called the 5 region summit। That means you let people of 5 regions of both the state of the line of control, you let them meet in Srinagar, Muzaffarabad, अपने जम्मू में, आपके जो एरियाज हैं, इसके अलावा हमारे 5 जो खित्ते बनते हैं मुजफ्फराबाद में, because we are the real victims of this problem, the principal sufferers of this dispute। और उस वक्त वो मामला वो चला था 2001 से, लास्ट अटेम्प्ट हमने की थी 2012 में, but it never got through because of the political problems। That was a very, very huge platform, जिसमें both nationalist forces as well as जो जिसको आप हुर्रियत का नाम दें या कोई और मज़ामती ग्रुप का नाम दें, they all agreed that yes, there is no other way apart from participating on a people to people level in all the 5 regions of the erstwhile Jammu and Kashmir state। उसमें आप चूंकि हमारे जैसे हमने बात की नहीं, पंजाब is also, it suffers। So उसका मतलब people to people dialogue at all levels। और जो आज शाह साहब की तरफ से ये कार्रवाई हो रही है, और जितने हमारे दोस्त हमारे पाकिस्तान से मिलते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे शामिल होते हैं, उसमें अच्छा होगा एक अच्छा खासा पावरफुल ग्रुप। It is constituted
and it starts work with the powers, with the oppositions of both the countries, and to tell them, okay, sir, come on, let's sit down, tackle these issues. हम ये अपना ये बंद करें ये जो किस्सा हमारा चला आ रहा है. हालांकि जब भी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी, चाहे वो हिंदुस्तान में मिले, चाहे पाकिस्तान में मिले, चाहे दुनिया के किसी और कोने में मिले, वो तो अपने आर्ग्यूमेंट्स वगैरह करके तो बैठते तो इकट्ठे ही खाना खाते हैं, एक दूसरे के घर में जाते हैं. मैं खुद हर जगह जहां मैं वर्ल्ड में ट्रेवल करके जहां भी कहीं पाकिस्तानी मिले, हिंदुस्तानी मिले, आपस में जफ्फी मार के बैठ जाते हैं. हाँ, डिस्कशन भी करते हैं, आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, मगर करते हैं और बैठते हैं, क्योंकि वी हैव द सेम कल्चर, सेम हमारी जबान एक, हमारा कल्चर एक. सो टू कट इट शॉर्ट, बिकॉज ओपी शाह साहब ने सिग्नल दे दिया, I would recommend constitution of a very effective group, number one. Number two would be that we should press very hard for diplomatic relations to be opened, visa facilities to be given. We should be allowed to travel to each other's countries, and we have to sit down and see that there is an end to these hostilities, because we are spending billions and billions and running somebody else's industry on the cost of our nations and cost of our brotherhood. So, and in this matter also, Kashmir being a main matter, a main core matter, has to be resolved by dialogue, not by guns, not by war. And I am all out for the proposals put down. जितने भी हमारे साथी इसमें हमारे जो मिले यहाँ पर, and I बहुत शुक्रिया आप सबका that we can at least meet virtually, and it is time now to meet physically in Pakistan, and then in India, and inshallah sometime on both sides of Kashmir and in both sides of Punjab. Thank you very much, Shah Sahab. Thank you very much, Muzaffar Shah Sahab. Haq Sahab, who would like to speak from Pakistan now? Shah Sahab, thank you very much for बात. हम गुज़िश्ता जितने भी सेमिनार्स भी हुए, मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस हुए, उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहे हैं, और आज कुछ हमारे नए दोस्तों ने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, तो मैं घूम के लास्ट मीटिंग पे जिसमें तजवीज़ दी थी वो थिंक टैंक की या कोर ग्रुप की, मैं I am highly grateful, highly thankful to the different participants who have pressed and agreed to the need that we should now move in this direction. तो शाह साहब, मैं I would like कि भाई हम आप मिल के किसी भी ये मीटिंग के बाद आपस में गुफ्तगू करके कोई इसको अमली शक्ल दे दें, अमली शक्ल दे के, और जैसा कि लास्ट मीटिंग में सजेशन थी कि हम एक कॉमन ग्राउंड तलाश करके कॉमन कंसेंसस के साथ हम जो है ना एक डिक्लेरेशन दें. वो डिक्लेरेशन वुड बी मीनिंगफुल. उस डिक्लेरेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है, और दो एंगल से, पॉलिटिकल एंगल एंड इकोनॉमिक एंगल, ये दोनों की जरूरत है. और आप, as I know you as a chartered accountant, you can draw out a balance sheet कि भाई हमने क्या खोया, क्या पाया, कितने पैसे हमने जाया किए, और वही पैसे अगर जो है वो लोगों के बहबूद पे खर्च होते और बारूद पे ना खर्च होते, तो किस हमारे लोगों को, कॉमन मैन को, जिसका कॉमन मैन का जिक्र इस मीटिंग के अंदर भी किया गया है, उसको कितना फायदा होता, या हम लोगों को कितना बेहतर जिंदगी दे सकते. तो एक तो ये, और दूसरा ये है कि बात फिर वही घूम फिर के आएगी who is the major stakeholder in Kashmir? Pakistani, Indians, or the Kashmiris? We should not forget that Kashmiris are the main stakeholder. और शाह साहब, आपकी काविशें रही हैं, आपने कश्मीर पे बहुत काम किया है, आपने कश्मीर को बहुत
करीब से देखा है, हाउ दे आर फीलिंग, हाउ दे आर लिविंग, वो सारी चीजें आपके सामने। और हम दोनों मुल्क जो है बैठ के आपस में तो बात करते हैं, मेजर स्टेक होल्डर जो है वो हमारा कहीं साइड पे पड़ा होता है। तो दिस इज नॉट द वे, दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम। वी हैव टू, अब इसकी जरूरत है। अगर हम आज से बात शुरू करना चाहते हैं तो ट्राइपार्टाइट होनी चाहिए। कश्मीरी भी उसमें शामिल हो, पाकिस्तान भी शामिल हो, इंडिया भी शामिल हो, तीनों मिलके और फिर किसी सोल्यूशन पे पहुंचे। क्योंकि मेजर विक्टिम भी कश्मीरी है, जैसा कि मुजफ्फर शाह साहब ने कहा और निजामुद्दीन भट्ट साहब ने भी कहा। तो उनको उनको और मेजर स्टेक होल्डर भी वही है, तो उनको जो है इसके बीच में शामिल होना चाहिए। जब तक ये शामिल नहीं होंगे और तीनों मिलके नहीं है किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे, उस वक्त तक जो है ये मसले का हल नहीं हो सकता है। अब कमिंग बैक अगेन, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरी बातें आप तक पहुंचती रहती हैं। आई एम्फसाइज ऑन इकोनॉमिक्स ऑल द मोस्ट। और उसके अंदर हाँ एक बात में रह गई कि आप पास्ट की बैलेंस शीट तो बनाएंगे, क्या खोया क्या पाया। अगर आप आगे की 10 साल की बना लें, जिसको प्रोजेक्शन कहते हैं आपकी जबान में, तो वो एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी अगर आप बना लें कि अगर आज हमारी जंगें खत्म हो जाती हैं तो हमारा जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है वो लोगों पे अगर खर्च होगा तो क्या क्या जो है उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और अभी जो हो रहा है जो है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जाया कर रहे हैं, जो अवाम का पैसा है, अवाम पे लगना चाहिए था, वो हम फायदा किसको पहुंचा रहे हैं? जो वॉर मशीन्स तैयार कर, जो मिलिट्री हार्डवेयर बनाते हैं, वो हमारे अंदर नहीं है, वो वेस्ट में बैठे हैं। तो लेट्स कंसंट्रेट on ourselves, let's focus on ourselves, let's हम साउथ एशिया, हम इस सब कॉन्टिनेंट के बेनिफिट की बात करें। और जैसे बाकी सारे लोग कह चुके हैं और जितनी जितनी तजावीज आई हैं, मेरा ख्याल है कि आप उसको भी अगर समराइज करके आज सबसे उस पर ले लें, अप्रूवल भी ले लें। जैसे सार्क वाली बात है और ये फिर ये बायलेटरल टॉक्स की बात है या ट्राइपार्टाइट टॉक की बात होती है। तो इसके ऊपर अगर आप लोगों की राय लेके और एक एक सॉफ्ट डिक्लेरेशन, दिस वुड नॉट बी, ये एक डिमांड होगी, डिक्लेरेशन नहीं होगा। डिक्लेरेशन तो हम आप मिलके, आपकी साइड के लोग, हमारी साइड के लोग, एक्सपर्ट्स जिन्होंने ट्रैक 2 में भी हिस्सा लिया हुआ है, जिन्होंने मीटिंग पीपल टू पीपल मीटिंग में भी हिस्सा लिया हुआ है, और मुझे याद है और मरहूम ने बहुत काम किया कि दोनों मुल्कों के लोगों को करीब लाया जाए। मुझे इतना ही कहना है और सुनना आपसे। Thank you very much. May I now request ID Khazuria from Jammu. आप कुछ बोलना चाहेंगे for couple of minutes, खजूरिया साहब? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, बोले आप। रिस्पेक्टेड शाह साहब, बाकी सभी साथियों, दोनों देशों से और दोनों देशों के आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर मुबारकबाद। और उसके साथ ही मैं दोनों देशों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 47 में जो 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात थी, उसमें जो लोग शहीद हुए उनको भी हमें याद करना चाहिए। आज के बड़े लोगों ने जाने की और हमें आजादी मिली। मैं इस बार जो आज एजेंडा है जो कंक्लूड होने तरफ जा रहा हूँ, मैं इस तरीके से देखता हूँ कि आज दुनिया जो है, मैं एक इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेट, मैं समझता हूँ कि दुनिया आज की टेक्नोलॉजी और आज की साइंटिफिक सच्चाई जो है वो हमें आत्मनिर्भरता और एक दुनिया की तरफ लेके जा रही है। और जब एक दुनिया की तरफ जा रहे हैं तो लाजमी है कि हमारा अपने देश जो है वो कहाँ खड़े हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। आज दुनिया में वो आप ही है। हेलो, यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमें आगे रुकावट आ रही है
जो खासकर हमारे सार्क कंट्रीज में, वो हमारे दो देशों के बीच जो जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। और दोनों देश इसी बहाने से लगातार पिछले 70 सालों से एक ना एक बड़े देश का सहारा लेकर हथियारों की दौड़ में फंसा रहा, और घर में गरीबी बढ़ती रही, बेरोजगारी बढ़ती रही, हमारी मुसीबतें बढ़ती रही, और हम एक दूसरे को दोष देते रहे। आज जरूरत है कि अगर दुनिया एक तरफ जा रही है, एक इकट्ठी इकाई की तरफ जा रही है, हम अलग अलग जगहों पर कुवैत, क्वाड या शंघाई या अलग अलग ग्रुपों में अपनी तलाश कर रहे हैं अपनी भूमिका। हम पहले अपनी भूमिका सार्क में एक्टिव करें, दोनों देश। अगर हम सार्क को मजबूत बनाते हैं तो हमें क्वाड और शंघाई और दूसरे देशों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी अभी पिछले महीने प्राइम मिनिस्टर साहब ऑस्ट्रेलिया में गए थे, तो जहाज से एरोप्लेन से उतरते उन्होंने एक शब्द बोला था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अगर ये सच्चाई है, उनको भी सच्चाई लग रही है कि दुनिया एक है, जमीन एक है, और उस पर फैमिली की तरह हम रहते हैं, तो लाजमी है कि पहले फैमिली के जो घर के बशर हैं, जो घर के मेंबर हैं, जो इंडिया पाकिस्तान है, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, उनको खुशहाल कैसे किया जाए। हम एक दूसरे के जनता के अंदर कोई दुश्मनी नहीं है। मैं अभी देख रहा था जब पाकिस्तान के अंदर महंगाई का दौर चल रहा था, तो वहां के पत्रकार जो इंटरव्यू दिखाते थे वो कहते थे हिंदुस्तान भाई बड़ा 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, वहां पर तो टमाटर सस्ते हैं, वहां पर तो जो चीजें सस्ती हैं। अब जहां पर महंगे हो गए हैं, तो अब जहां के इंटरव्यू ऐसे आ रहे हैं कि पुराने देश में पाकिस्तान तो भाई इस हालत को ओवरकम कर गया, हम फंसते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जरूरियात जो जनता की थी वो हम पूरी नहीं कर पा रहे, और दोनों देश हथियार खरीदने की दौड़ में और एक दूसरे को नीचा दिखाने की दौड़ में लगे हुए हैं, और जिसकी वजह से हमारी सार्क इनफेक्टिव होगी, बिल्कुल इनफेक्टिव। जब कभी कहीं हम देश में कोई बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम दुनिया के विश्व गुरु बन गए, लेकिन हम सार्क में अपनी लीडरशिप नहीं दे पा रहे, सार्क को हम एक्टिव नहीं कर पाए। हम अपने दो हाई कमिश्नर आपस में एक देश से दूसरे देश में नहीं भेज पा रहे हैं। हम अपनी जनता को मैच देखने तक मजबूर कर देते हैं कि मैच देखना है या नहीं देखना है, या कौन सी गेम में खेलना है या नहीं खेलना है। ये जो चीजें हो रही हैं, हमें इस बात को हटाना पड़ेगा। और तीसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि जम्मू कश्मीर में जो प्रॉब्लम लगी हुई है, इससे सिर्फ कश्मीर जम्मू का ये मसले ये नहीं है कि मसले की बात है। जम्मू कश्मीर लगातार 75 सालों से बैंकर कल्चर में रह रहा है दोनों देशों के बीच में, जो 500 किलोमीटर हुआ से लेकर जो ऊपर ले करगिल तक बॉर्डर है हमारा, वहां पर दोनों किनारों में लोग रहने वाले दोनों तरफ वो बैंकरों में बैठ कर जा रहे हैं, और वो क्या देख रहे हैं, 70 साल से उनकी 3 पीढ़ियां गुजर गई हैं और चौथी पीढ़ी अब तैयार हो रही है। हमें वो दुनिया लानी है जो कि दिल्ली के और लाहौर के लोग भी देखते हैं और कराची के लोग भी देखते हैं। हमें तभी हो सकता है कि जो राय आ रही है, मैं इससे मुक्त भी हूँ और एग्रीमेंट है मेरा कि हमें एक ग्रुप बनाकर जो लोग भी पॉलिटिक्स ऑफ पीस पर यकीन करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ पीस एंड इंटरडिपेंडेंस, आज दुनिया इंटरनिर्भर है, आज हर चीज एक दूसरे के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकती। हम अब टेक्नोलॉजी में नहीं बढ़ सकते, बीमारी ठीक करने में नहीं बढ़ सकते, कोरोना ठीक करने में नहीं बढ़ सकते, दवाइयां एक दूसरे देश को दिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, तो फिर हम लड़ाई किस लिए कर रहे हैं? लड़ाई सिर्फ इनकी खुशी की है, ये दोनों देशों में है कि दोनों देशों की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कुर्सी को बचाने के लिए हमें धोखा दिया और हम धोखे में फंस गए, और आज जहां तक पहुंच चुके हैं कि आज शायद अपने अंदर भी उस धोखे के साथ हम आपस में भी लड़ने शुरू हो गए हैं। जो हमारे देश के अंदर अलग अलग डाइवर्सिटीज हैं, अलग अलग एथनिसिटीज हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, उनके अंदर भी विश्वास कम होता जा रहा है। इसलिए आज जरूरत है कि आज देश में और देश के साथ अपना जो पड़ोसी है, इन पड़ोसियों की आपस में ये बहुत से फिलासफरों ने भी कहा और खासकर वाजपेयी ने भी कहा कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं, दोस्त बदले जा सकते हैं। अगर सच्चाई यही है तो फिर हम सच्चाई पर चलते होंगे,
और अगर जो लोग थोड़ा बहुत सोचते हैं वो आगे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? ये चीजें हमें निकालना पड़ेगी अपने अंदर से। अगर अपने अंदर भी कोई डर है तो उसे डर को निकालना पड़ेगा और हमें ये एक फॉर्मली इस आइडिया को, इस फार्मूले को कि अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें इकट्ठे साथ साथ चलना पड़ेगा और जो अपनी पोलिटिकल सोशल पोलिटिकल प्रॉब्लम में है वो हमें रिजॉल्व करनी चाहिए थ्रू डायलॉग। और उसमें सबसे बड़ी जो है वो जम्मू कश्मीर ही है जिसके हमें पोलिटिकली उसकी स्टेजेस हो सकती हैं। अगर आज लाइन ऑफ कंट्रोल है इसे लाइन सॉफ्ट लाइन भी बनाया जा सकता है। जैसे पहले मुजफ्फराबाद का रास्ता खुला था, पुरुष से भी रास्ता खुला था रावलाकोट का। अगर वो रास्ते ऐसे खुल सके थे, पंजाब के रास्ते भी खुल सकते हैं। पंजाब का बिजनेस, व्यापार, किसानों का एक दूसरे के देश में जा सकता है, आ सकता है। जो घूम कर दुबई से होकर बॉम्बे से होकर पहुंचता है तो हम बड़ी जल्दी इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं और एक विश्वास बनाया जा सकता है आने वाली पीढ़ी में कि हमारा जीना मरना जो है वो एक है। नहीं तो जो देश आज वो भी एक दुनिया बनाने में लगे हुए हैं। जो पैसे कमाने वाले देश हैं, जो आर्म्स इंडस्ट्रीज है, वो भी एक दुनिया बनाने में लगे हुए हैं। और वो बना के दुनिया तो डिक्टेटरशिप इस वक्त तो दुनिया में 70% डिक्टेटर तानाशाही का दौर चल रहा है। वो पिछले 10 साल पहले 45% था। 10 सालों में 70% आइडिया जो है, मानसिकता है, वो तानाशाही की बनती जा रही है और आगे 10 सालों में जो 100% हो जाएगी। अगर 100% हो गई तो कोई देश डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं रहेंगी, बातचीत के रास्ते खत्म हो जाएंगे, डायलॉग जो है वो सब जो ठंडे पड़ जाएंगे। इसलिए इसे हमें डटकर आज के वक्त में उठना चाहिए और डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए, ग्रुप बनना चाहिए। और ग्रुप वो है वो जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम को करते हुए, जो एक दोस्त ने साथी ने बोला था, ट्राइलेट कह लो, ट्राई पार्टी कह लो, या विजन आर पार्टीज कंसेंसस कह लो, इसे हमें इस तरीके से जाना चाहिए जहां पर किसी को ना जीतने का हवा खड़ा किया जाए, ना हारने की दबाव देखना पड़े। सब लोगों की भिन्न भिन्न जो है वो सिचुएशन बने, हर आदमी ये समझे कि मैं जीता हुआ हूँ, मैं खुश हूँ और मेरे लिए ये आने वाला वक्त है पड़ोसी के साथ अपने घर के अंदर, अपने देश के अंदर हम एक नई डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाने के काबिल हो सके। मैं इसके साथ ही धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका। Is anyone from Pakistan interested in offering his comment now? जी, क्या आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ, आपकी। खालिद महबूब साहब। खालिद महबूब, हाँ, आप 10 सेकेंड्स में अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए, फिर 2 मिनट बोल दीजिए। देखिए, मैं खालिद महबूब हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ। पहले मैं रेलवे में काम करता था और मेरा ओरिजिन जो है फैमिली का वो यूपी का शहर है लखनऊ। अब और आप अपनी मेरी बात माँ, बोल दीजिए। मैं बोल देता हूँ, मेरी माँ है गोंडे की। मैं पाक इंडिया फोरम फॉर पीपल्स एंड डेमोक्रेसी एंड प्रोग्रेस में 3-4 दफा इंडिया आया हूँ। इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में जाती तौर पर, इनफरादी तौर पर कोई मुनाफरत नहीं है। बॉर्डर के ऊपर मेरी मुलाकात इंडिया के लोगों से नहीं होती, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट से होती है, जो कि इंतहाई अनफ्रेंडली, हाईली सस्पिशियस। तो हम सब लोग आपस में तो ठीक हैं, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल विल है उसका इजहार जिस किस्म की हुकूमत से होता है वो हमारे ख्यालात से बिल्कुल ही मुताबिकत नहीं रखती। तो पहली बात तो ये है, हम सब लोग कश्मीर के बारे में बात करते हैं। कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मसला नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि कश्मीर कश्मीरियों का मसला है। एक दफा हम सब लोग ये सोच लें कि कश्मीर कश्मीरियों का मसला है, ना वो पाकिस्तान बनना चाहता है, ना वो हिंदुस्तान बनना चाहता है, कश्मीर कश्मीर बनना चाहता है, जैसे कि वो तारीख में हमेशा से था।
तो हम सब लोग मिलकर मैं तमाम बातें दोहराने से मैं बहुत हद तक हसन जाफर जैदी साहब ने जो बातें की हैं उनसे मेरा काफी से ज्यादा इत्तेफाक है। तो हम सब लोगों को मिलकर एक तो आपस में राब्ते बढ़ाने के लिए आजकल सोशल मीडिया है, तो हम पीरियोडिकली बात करते रहें और हम अपने सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट्स को और दायरे को बढ़ाएं। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी अपनी जगह पर रहकर जो पॉलिटिकल विल है लोगों की वो करनी चाहिए, वरना एंटी इंडिया और एंटी पाकिस्तान बातें जो हैं सिनेमा में भी हैं, जो आपका मीडिया है जिसको रवीश कुमार गोदी मीडिया कहता है, और मैंने उसकी बात नहीं सुनी थी तो मैंने सुने बहुत सारे प्रोग्राम, तो वो इंतहाई ब्लिंगरेंट हैं और इलेक्शन जीतने के लिए आपके मुल्क में बहुत जरूरी है कि एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को हवा दी जाए। अगर नहीं है तो कोई इंसिडेंस क्रिएट किया जाए। इसी तरह इस तरफ भी उसकी कोई कमी नहीं है, इस तरफ भी मौके पैदा किए जाते हैं। तो जो हम लोग अगर आपस में मिल के बैठे हैं तो हमें पहला प्रोग्राम जो चॉक आउट करना चाहिए वो ये है कि हम अपने अपने रिस्पेक्टिव ममालिक में जो पॉलिटिकल विल है लोगों की उसको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना बॉर्डर पार आकर मिल्खा सिंह और खालिद महबूब गले मिल लेंगे मगर बॉर्डर की और पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं होगी। दूसरे ये है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उसके लोकल बेनिफिशरीज हैं। अगर हमने इंडिया और पाकिस्तान को देखना है तो हमने देखना है कि यहाँ की जो एलीट है उसको इस कंट्राडिक्शन से कितना फायदा है। अगर आप उसको देख लीजिए तो यू हैव टू वर्क अगेंस्ट दैट। अगर आप नहीं करते हैं तो हम आएंगे, मिलेंगे, एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देंगे और मामला वहीं रहेगा। ये दिस इज व्हाट आई हैव टू से। मैं आपका पहली दफा आज आया हूँ, अगर आप आइंदा भी मुझे कहेंगे तो मैं शेयर करूंगा चीजों को। और मैं आप तमाम सब लोगों का मशकूर हूँ, खास तौर पे मैं कश्मीर से, ये जम्मू से वाले जो लोग हैं उनसे मेरी एक तरीके से दिली माजरत है, क्योंकि 75 सालों में हम यही कहते रहे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और आपकी तरफ होता रहा भारत का अखंड भारत का हिस्सा है। कश्मीर को कश्मीर बनने दीजिए, कश्मीर आजाद रहेगा और इन सब कॉन्टिनेंट की तारीख में ज्यादा से ज्यादा अरसा वो आजाद रहा। अगर हम सब मिलकर इस बारे में कोशिश करें तो चीजें होती रहेंगी, फिर हम एक दूसरे से मिल सकेंगे। वरना जब मैं पहली दफा 2001 में इंडिया गया तो मुझसे पूछा था गुजरात साहब ने, बताओ खालिद कोई और काम है? मैंने कहा जी हाँ, मेरे पुरखों की हड्डियां दफन है गोंडे में और लखनऊ में, तो क्या मैं वहां जा सकता हूँ? तो मैं अपनी माँ के घर में जो वो छोड़ आई थी, जब उसके सामने खड़ा हुआ तो उसने कहा आप यहाँ क्यों खड़े हैं, ये एनिमी प्रॉपर्टी है। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, मैं एनिमी हूँ। अगर ये चीज खत्म होती है हमारी लेवल पर तो तभी चीजें ठीक हो सकती। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आप सब लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ कि एक तो आपने मेरी मालूमात में इजाफा किया और दूसरे आपने मुझ में एक स्ट्रेंथ दी कि मेरे जैसे लोग और भी हैं, उस तरफ भी हैं, हम इस तरफ भी हैं। अब पाक इंडिया फोरम को पाकिस्तान के लोगों ने खत्म नहीं किया, वीजा सरकार ने खत्म किया। यू कांट हैव अ वीजा, यू कांट हैव मीटिंग्स। हमें फिर ये जो हमें पास फोरम अवेलेबल है इसके ऊपर तो वीजा नहीं लगता ना, तो हमें इसको मजबूत करना चाहिए और आपस में मिलजुल कर किसी न किसी कंसेंसस पर पहुंचना चाहिए जिस पर हम मिलकर काम करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much.
Sunil Vatal Saab for a couple of minutes. Thank you, Shah Sahab. Before I go further, एक बेसिक पॉइंट मैं ये बनाना चाहता हूँ कि जितने भी Indians and Pakistanis who are in the third country, who are in Western countries, they make very good friends and very good neighbors. So my point is, and I have seen it, I have experienced it myself. So my point is, when we behave like very good friends and neighbors in a third country, why can't we do it in our own home, in our own countries? उससे बिल्कुल क्लियर जाहिर है कि प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन में. So, and administration में problem क्यों है? It is all because of electoral interests on both sides. So, basic point is that the administration has failed us. So, if the administration has totally failed us to bring us near, it is imperative on the part of civil society, it is imperative on the part of people like us to pick up this thing and do it on our own. जहां तक बात है कश्मीर की, Indo-Pak relations and Kashmir, this is a chicken and egg story. ये दोनों पहले वो होगा और पहले ये होगा ऐसा कुछ नहीं है. Both of these go hand in hand. It is only when the two nations improve their relations will we be able to solve Kashmir problem and vice versa. So both of these go together. The other point, and in the interest of time, I'll keep it brief. The other point is that the amount of radicalization that has happened in the last 8-10 years is what is detrimental to improving relationship in these amongst these countries. So, जो वो radicalization है, on the one hand there is radicalization on both the sides, and on the other hand there are people like us who do not believe in that radicalization and who are bent upon improving the relationships. That's why what we need to do is we should look at improving our trade relations, cultural relations and people engagements. और जैसे कि खालिद साहब ने बोल दिया है, वीजा पे बैन है, people to people interaction पे बैन नहीं है. Or people to people interaction we can increase by way of these sessions, but we also need to meet physically at some point of time, for which we should push the administration. So I think imperative, once again, I will repeat what has been said earlier. We need a think tank and we need the informal channels to open up. Thank you. Thank you very much, Mr. Vatal. Any other friend from Pakistan who would like to offer comments in couple of minutes? जो बोल चुके हैं वो भी बोल सकते हैं. I would like to, I mean, comment. Chima साहब. जी. Yeah. Couple of minutes and then Iftikhar Ahmed साहब. Surely. I am A.M. Chima. I have been the University of the Punjab professor and retired from there about 20 years ago. Many friends have pointed out to this about the trade between the two countries. I just happened to go through the statistics that India-China trade amounts to $135 billion US, with the disadvantage to India as well, around $20 billion, whereas that of the Pakistan and India just amounted to 1.5 billion, not to any disadvantage, almost the half of that goes to the bilateral trade. But one thing which I understand, that is that even in the ancient time, the human relationship developed with, of course, the production and also with the, of course, exchange of the products, that's the trade. And that is, of course, the basis of the survival of the life and also for enhancing the quality of the life. And I believe that although the attendees has referred to it, but it must be made the principal factor that if this forum could have any influence, that promoting the trade between the two countries, because the trade is, or the production is the genotype of the human society, and the rest, all other characteristics actually are the product of it.
So they would certainly improve if the trade, because the relationship would lead to the activation and the exchanges of there's dozens of the others activities of the human society. So my suggestion is that if the forum could really, make a point, particularly for improving the trade between the two countries, because parallelly the China's certain territorial conflicts, there are there, of course, other issues which is quite parallel to that of the Pakistan. But their amount of the trade is, quite high. 100 times higher than that of the Pakistan. So that could be made a point. And surely I believe that due to this, some sort of, let's say, conflict between the China and the India is not of to that extent, as particularly is India and Pakistan. So I conclude my comment, please. Thank you. Dr. Iftikhar Ahmed Saab. Thank you. I just want to add what Mr. Vatal has just mentioned about. There is now quite a big number of people from India and Pakistan who are living abroad, diaspora. My experience living in Britain, I have really good friends, and how quickly people from Pakistan and India, they come together in any meeting, in anywhere. So that's the one point I want to say, because there is no visa here. We are living in a third country. That's the one aspect. There are so many stories of people who migrated across the border in 1947 and then moved here. They're heart-wrenching stories. If colleagues just give me 1 minute, I will never forget this elderly gentleman who was a grandfather of my daughter's class fellow, who migrated from Multan to Delhi. When he came to know that my family, my in-laws are from Multan, we invited him. And he spoke in Saraiki after nearly 60 years. And he was, these are heart-wrenching stories. We cannot be given the visas to go across each other. I think we underestimate the power of people-to-people contact. We need to, most of colleagues have raised this issue that while the governments and the interests, vested interests, they're keeping the status quo, but the power of the ordinary people, we need to push for that, and only then the policies will change. I'm so glad that recently Pakistan has allowed the cricket team to go to India for the World Cup, because cricket is also part of subcontinents. If I say nothing else but religion, like the football is in Europe. Thank you. Thank you. Anybody else? Anybody else? Can I presume that all those who wanted to offer comments have offered their comments? Can I have a minute? Just a passing minute. Half a minute, yes. Yeah, I would like to address Zaidi Saab. Zaidi Saab, as we are today in front of the Supreme Court, and let me assure you that we expect justice from the highest court in this country, which is the whole world is watching that. And we will expect that the constitution of this country will be upheld in the case of Article 370, what you pointed out. So that is one part. And the second part, what I would also like to Mr. Shah, OP Shah Saab, to keep in mind, a very good suggestion that has come forward, because we have a diaspora, Indo-Pakistan diaspora throughout the world, and in particular also a diaspora of people from Jammu and Kashmir on both sides, living in Britain, US, in other areas. And they also have, they are the basic stakeholders also of this situation. And in our next meetings,
we should also try and see that if we can get some more people from this diaspora also involved in this meeting, and this will the platform will really become solid. And what just now Dr. Iftikhar Saab made a very important point. Do not underestimate the power of the ordinary people. Ordinary people are the power, basic power. So if we can really make this into a very powerful platform, I think we will be able to make the powers of both the countries listen to us somewhere, and hopefully we may be able to really put up a good platform. Thank you. Thank you very much, Muzaffar Shah Saab. जी, Anybody thank else you, for a thank you, minute? Shah Sahab. Just Yes, please. Please. मैं just तो a आपसे quick remark. रिक्वेस्ट करने वाला ही था. Please. जी, वो चूंकि मेरे हवाले से उन्होंने आर्टिकल 370 के ऊपर बात की है, तो मैं यही कहूँगा कि मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन अयोध्या पे जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। Zaidi Saab, I'm one of the petitioners, and also member of the PAGD, what we call People's Alliance for Gupkar Declaration, one of the executive members. So the whole world is watching this, and we are hopeful that the Honorable Supreme Court, which is widely respected throughout the world, they will strictly abide by the Constitution and give justice accordingly to people of Jammu, Kashmir, and Ladakh. Thank you, sir. Okay, thank you. Let us hope for the good. Okay. Thank you very Let's much. hope for the best. Anybody else? Thank you. Thank you, sir. Anybody else wants to say anything? Shah Sahab, can you hear me? Yes, please. Nijamuddin Saab, boliye. You see, this has been a very good session, like previous sessions also, and to our perception, productive one. But one thing which we will have to decide between ourselves is that whatever is concretized, summed up, and the ideas which come up, which need consideration by both governments and both peoples, this forum will have to decide how we reach to the governments and how we make people aware about the ideas which emerge here for their own benefit and for their own peace and prosperity, and for the benefit of two governments to come together and two countries to come together. Until and unless that is done, this may have some impact here, there, if it is noticed at all. We have to, what I want to say is, we have to make it known that there are people who are concerned, who are with ideas, who are with concrete suggestions, who are sons of this soil, who are concerned about peace, who are concerned about the realities that have to be acknowledged, and two governments, whatever the governments at any point of time, until and unless they take into account the suggestions that come forward from such a forum. This is not an ordinary forum. You have not been there out of blue. You have come over a time. You have struggled. You have done a service. And this needs to be acknowledged. And this forum should give a suggestion to ourselves also, that how do we make ourselves and our views known. Until and unless that is done, मुझे नहीं लगता कि it can have too much of an impact. Good suggestion. I hope we should. Yeah, yes, please. Last minute. हाँ जी, बोलें. What I want to say is कि इसके अंदर जो आज जितनी अच्छी और ओपन माइंडेडनेस के साथ, क्लैरिटी के साथ जितनी बातें हुई हैं, ये काबिले सताइश है। और इसके ऊपर जो है ना, हम आप मिल के आगे चल के जो है एक कोई सिलसिला ऐसा क्रिएट कर ले जो सब लोगों की ख्वाहिश है कि हम एक कॉमन कंसेंसस के ऊपर जो है दोनों जगह के लोग जो है शामिल होके एक अपनी अपनी गवर्नमेंट्स को और अपने अपने
लोगों को एक मैसेज दे सके और उसके ऊपर जो है लोगों की मोबिलाइजेशन भी कर सके। तो ये बहुत बड़ा काम होगा शाह साहब, और ये मेरा ख्याल है कि आपसे बेहतर जो है ना कोई और नहीं कर सकता। दिस इज योर प्लेटफॉर्म, यू क्रिएटेड द प्लेटफॉर्म, you have struggled with for this peace plan. So let's come with a peace common consensus peace declaration, जो कि हम आपस में बातचीत करके एक ग्रुप बना के, जो लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको सबको इकट्ठा करके एक बना के हम बना लें, और फिर उसके बाद सबके सामने पेश करके उसकी अप्रूवल लेके उस एक ऐसा डिक्लेरेशन हम दे पाए। दैट वुड बी वेरी वंडरफुल। और मैं एक जुमला कहूंगा कि हमें सिर्फ फोकस करना चाहिए, लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव, और उसके बेसिस पे जो है हम एक दूसरे के साथ जो है ना बातों को आगे बढ़ाएं। Agreed. Thank you. Thank you. Thank you very much. Let me thank you very much for attending this meeting, and I hope and trust our actions and activities will help in creating the climate of trust and confidence in the subcontinent. And we should try and bring it to the knowledge of people concerned in both the countries about our discussion, so that they also benefit and they take appropriate actions. This is not the last step. This is not the last meeting. This is not the first meeting. We should continue such efforts, and they have some meaning and relevance. So I'm sure if we continue these efforts with honesty and sincerity of purpose, they will bring results, and subcontinent as a whole will be benefited by such efforts. Let me wish you once again happy Independence Day, and thank you very much for joining this meeting and participating meaningfully and effectively. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Shah Saab. Thank you. Thank you, Shah Saab. Thank you. Shah Saab. Thank you. Thank you. We are ending the session now. Thank you.